तिलानी में हुआ है। दिस वीडियो इज़ अबाउट कि एक फीमेल जब ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या कोई भी ब्रेस्ट की सर्जरी चाहते हैं तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हर माइंड, वो क्या चाहते हैं। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली इज़ फॉर विमेन। ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आप प्लास्टिक रिलेटेड पूछना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। Specifically, is what all factors does a woman have in her mind before at the time that she attempts to check about breast cosmetic surgery. Good evening to everyone जो मुझे Instagram पे और YouTube पे भी live join कर रहे हैं. Now, specifically, broadly, if we look at the factors which are important. One, अगर किसी patient की breast size छोटा है, her biggest concern is about padded bras. जो मुझे आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ एंड सो मेनी पेशेंट्स टेल अस दैट पैडेड ब्रा इज़ पेनफुल बिकॉज हर बार उसका वो टाइट प्रेस ब्रा के जो स्ट्रैप्स हैं वो खींचते हैं, दैट इज़ पेनफुल एंड दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इवन फॉर वीमेन जो कि जिनके लार्ज ब्रेस्ट हैं या सैगी ब्रेस्ट हैं, बिकॉज द पुल ऑफ द ब्रा, बिकॉज ब्रेस्ट ऐसे खींच रहा है और ब्रा ऐसे खींच रहा है, देर आर टू अपोजिंग फोर्सेज, एक ऊपर एक नीचे, एंड अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की दैट लेडी हैज़ टू बेयर दैट और वो पूरा एक टाइट पुल हो जाता है यहाँ पे, कॉजेज अ लॉट ऑफ मार्क्स, पेन पूरे दिन। इतने हैवी पैडेड ब्राज या हैवी ब्रा पुल को झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गुड इवनिंग वंस अगेन टू एवरीवन ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। गुड इवनिंग पराग, गुड इवनिंग राकेश जी। दीपावली की सबको बहुत बहुत मुबारक है और एक नया साल शुरू भी होता है दिवाली के दिन से। समायरा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। ब्रेस्ट लिफ्ट कैन बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, क्या स्कार्स इंपॉर्टेंट हैं? प्रॉबेबली नॉट। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड 15-16 ईयर्स बैक जब मैं ब्राज़ील गया था, जहाँ पे मैंने ब्राज़ील से सारी ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी सीखी थी, तो मेरे टीचर डॉक्टर आना जुमीरा, ब्राज़ीलियन प्लास्टिक सर्जन, उन्होंने मुझे कहा था कि मोस्ट विमेन विल ट्रेड ऑफ स्कार्स फॉर अ ब्रेस्ट शेप, सो दे डू नॉट माइंड कि अगर स्कार कम्स इन, बट एज लॉन्ग एज द ब्रेस्ट शेप इज़ परफेक्ट। सो अगर एक छोटा सा स्कार आता भी है, मोस्ट विमेन विल एक्सेप्ट इट एज लॉन्ग एज द ब्रेस्ट शेप इज़ करेक्ट. Third factor, which it is important but not very important in my mind, is the cost. Now I certainly believe कि देखिए क्या होता है कि अगर हम एक suppose tear drop implant choose कर रहे हैं for breast implant surgery, now tear drops are very expensive implants, so उसमें automatically the cost goes up. अगर if you are doing an internal bra technique, internal bra basically longevity देती है आपकी breast के lift process को, implants को, and that is an expensive process because वो बहुत डेलिकेट प्रोसीजर है, उसको बहुत कम सर्जन्स कर पाते हैं. वी हैव बीन डूइंग इट रेगुलरली, सो कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, बट आई ऑलवेज टेल एवरी पेशेंट प्लीज़ आप अपने आप को बजट कर लीजिए, एंड दिस गोज फॉर एवरी सर्जरी. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, ऑलवेज ट्राई टू बजट योर सेल्फ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट दैट यू कैन गेट. आई एम नॉट सेइंग कि हर पेशेंट को ऑलवेज परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा. नो, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, वी ट्राई टू करेक्ट. हम लोगों की कोशिश रहती है कि अगर मिस्टेक हो गई है, कोई इनएडवर्टेंट मिस्टेक हो गई, तो देन वी ट्राई टू करेक्ट दैट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, वी आर नॉट गॉड्स. सो these factors have been for me the most important factors. The first always is the concept, the bra, the pull, padded bra or normal bra. Second is the scar. Third is the cost, and fourth I think this probably सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है. अगर आप मेरे साथ लाइव इस टाइम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन अमित गुप्ता पे आप आ सकते हैं, मेरे साथ लाइव कंसल्ट भी कर सकते हैं. सैगिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी लेडी को अच्छा नहीं लगता. नो बडी लाइक्स कि उनकी ब्रेस्ट सैगी हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ चाहे ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो, चाहे ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो, चाहे ब्रेस्ट इज़ एडिक्वेट, नो बडी लाइक सैगिंग. एंड देयरफॉर अगर ब्रेस्ट छोटा है, सैगिंग है, द करेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई हैव स्टार्टेड यूजिंग द इंटरनल ब्रा टेक्निक, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं.
breast heavy हैं, saggy हैं, so breast reduction obviously along with a lift, and normal size saggy हैं, so just a breast lift with or without breast implant. So these are the factors which जो मुझे लगता है most important factors हैं लेडी के लिए to decide about whether they want to do a breast cosmetic surgery or not. Now, थोड़ी देर पहले I was live about calf implant surgery, so this is something which you can tell your friends as well. आप अपने friends को colleagues को बता सकते हैं about calf implant surgery. इंडिया में बहुत commonly नहीं की जाती है, and this is something जो हम डिवाइन पे कर रहे हैं. That is जैसे चिकन लेग्स हो जाती हैं लोगों की, जिसमें जो नी के नीचे की लेग है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, उसके जो इनर एस्पेक्ट पे हम काफ इम्प्लांट डालते हैं तो वो काफ की एक मोर नॉर्मल शेप आ जाती है. अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जो है, यूट्यूब पे हैं राकेश जी. पराग बॉम्बे का भी मैं नहीं जानता, दिल्ली आ सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं मेरे दूसरे प्लास्टिक सर्जन, मेरे सीनियर सर्जन आते ही रहते हैं बॉम्बे, मैं उनके साथ आपकी सर्जरी फिक्स कर सकता हूँ. मेरा अपना पर्सनली आना भी 100% तय नहीं है. गौरी गुड इवनिंग अगेन. बिलेटेड कुछ नहीं होता, बिलेटेड इज़ जस्ट रिमेंबरिंग समथिंग, समवन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो मैं कभी भी बिलेटेड नहीं बोलता. अगर मैं किसी का बर्थडे मिस कर रहा हूँ तो अगले दिन बोलता हूँ आई फील प्राउड कि कम से कम मैंने आपको विश किया, यू आर इन माई थाट प्रोसेस, सो फील प्राउड ऑफ दैट. मैं बिलेटेड नहीं बोलता. बिलेटेड मीन्स मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं भूल गया. नहीं, आई डिड नॉट नो, उस टाइम पे मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था. बट यू आर इम्पॉर्टेंट इनफ टू मी, आप मेरे लिए उतने इम्पॉर्टेंट हैं कि मैं आपको अगले दिन या उसके अगले दिन भी विश करूँगा. सो आई थिंक वी शुड फील प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, कि आप मुझे विश कर रहे हैं. So Gauri is asking if she has seen many videos about breast implant surgery. मेरे videos Gauri or somebody else's videos? Do you have any questions? You can straight away ask your questions. So calf implant के बारे में मैंने वीडियो आपने देखा लाइव तो 2 घंटे पहले. बटक implants हम लोग कर रहे हैं. Samara, I'm wishing you now, and that is why you're important to me, because the moment you said I didn't wish you on your birthday, आप मेरे लिए इतने important है कि I will take that opportunity to wish you right now, and the greatest happinesses in all these years उन सबको मिला लीजिए. I hope you get more than that happiness in this year. That is how important you are to me. So gynecomastia सर्जरी के बाद पानी जैसा नज़र आ रहा है, मसाज से ठीक हो जाएगा. सिरोमास होते हैं वो ठीक हो जाते हैं. Meanwhile, yeah, got it. Great. Great. So it's a fact कि मैं जितने ब्रेस्ट की सर्जरी के वीडियोस पोस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो सर्जरी आके कर पाते हैं और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं. मेरे कई सारे पेशेंट्स आपको टीवी पे नज़र आएंगे, आपको स्क्रीन पे मूवीज़ में डन बाय मी. सो आई डू. Don't worry Gauri, that's okay, you don't need to know Hindi to do surgery, you just need to have the confidence in me. Place your confidence in me and you will be great. So don't get worried with what you see on the screen. Be confident about the kind of results that you can expect. So that's okay Gauri, don't worry about that. We can always use the translator to communicate, but as long as you know just a little bit of English, that is fine. So you come to Delhi, we will pick you up from the airport, and we'll get you to the hospital, do your surgery, and get you back to the airport, drop you at your flight so you can reach home safely. I am going to start. So आप में से कुछ लोग जानते हैं that I have a channel on YouTube that is basically a channel of motivation and growth. So I am going to reactivate that channel. So that is the thing that Rupam, Dr. Tabi, I am going to restart my channel on YouTube, and of course the same thing on the Instagram as well, and that is about your personal growth, your own confidence again, and we'll talk about a bit of motivation. This channel is on YouTube already, but I had left that channel for a while, लेकिन अब मैं उसको reactivate करूँगा. Gauri, you can make me speak with your family. I'll try to talk to them. So that will help a lot of people, and I will talk on that channel of how you can push yourself to become better human beings, better growth, some tips about personal financial planning,
कि आप घर पे अपनी नॉर्मल फिनेंसेस को कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट बेटर ग्रोथ. सो मैं आई एम नॉट आप इंस्टाग्राम पे तो रहेंगे ही मेरे साथ रूपम. आई थिंक जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. And I think the channel is Let's Motivate and Smile, or you can just search Amit at the rate divinecosmeticsurgery.com. just subscribe to the channel. अभी मैं उस पर लाइव आ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज उस पर अभी 45 सब्सक्राइबर्स हैं. इफ़ पॉसिबल आई नीड जस्ट 5 मोर सब्सक्राइबर्स ऑन दैट. 50 हो जाएंगे तो मैं उस पर लाइव आ सकता हूँ. बिफोर विदाउट दैट आई एम नॉट एबल टू गो लाइव. उसके लिए मुझे अपना सिस्टम ऑन करना पड़ता है एंड दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज हम लोग मोबाइल पे इतनी यूज टू. एनीवे, सो लास्ट वीक वी हैड talked about, so we had a lot of surgeries, calf implant, 4D body contouring, BBL, we had breast implant surgeries, we had internal bra surgeries, we had a lot of different procedures जो उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी. एंड ऑल्सो री इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया 360 जिसमें द कंप्लीट एक थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं हम लोग गायनेकोमेस्टिया 360 डिग्री टेक्निक से. Gauri, that's okay. You don't have to have Instagram. You can write to us on my number. Please note down my number. No, Gauri, there is no age factor. 9811 994417. Just drop a WhatsApp message and my team will get back to you on it, and we will make sure that you feel the confidence to come to Delhi and get your procedure done. So guys, thank you so much for joining me. And Vikas Mishra is asking, the number is 9811994417. Rupam, stay tuned. This is not the channel, this is not the topic right now to talk about personal growth motivation. So there are some people who are with us on Instagram and some are with us on YouTube. How many of you are actually interested in your own personal growth? How many of you are actually interested in working on your own personal finances without बिना किसी financial advisor के आप अपनी personal finances को better कर सकते हैं to without risk and secure your future. So अगर आप में से कोई interested हैं, only then I will talk about that in my new channel, because otherwise I will not. A lot of things about how, so there has been, so no Rupam, we don't, so this channel is, these are education channels. आप जानते हैं कि मेरे सारे videos are for education, and once just keep seeing that video, because Rupam, you are encouraging me कि मैं उसमें भी full on आ जाऊँ. मैं थोड़ा सा avoid करता हूँ उसमें because बहुत time लेता है. Talk about motivation, talk about personal growth is actually very draining, because उसमें my involvement बहुत ज़्यादा होती है मेरी. एक पर्सनल मेंटल लेवल पे एक स्पिरिचुअल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सर्जरी, वो दैट इज समथिंग आई डू एवरी टाइम. तो उसमें मेरा एफर्ट नहीं लगता बिकॉज इट्स फ्रॉम विद इन. बट व्हेन यू टॉकिंग ऑफ मोटिवेशन, आई हैव टू गेट इनटू दैट थिंग. इट्स वेरी ड्रेनिंग फॉर मी. सो आई ओनली डू इट इफ आई हैव पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन. सो लेट्स सी द इंटरेस्ट. ज्वाइन मी. मेरे चैनल को लेट्स मैं जस्ट आई कांट चेक है क्योंकि मैंने भी अगर चेक किया amit@divinecosmeticsurgery.com पे आप करके मुझे 50 टच करा दीजिए अभी वहाँ पे. आई एम 45 देयर राइट नाउ. मेक मी टच 50 and then we can go live. In fact, if we touch 50 right now, in 20 minutes I will actually go live with some basic tips about what you can do, some basic steps about how you can increase your own personal growth. आप अपनी personal growth ऐसे in few tips से within 1 week you will start seeing a change. So there are certain things जो मैंने अपने लिए किया. कभी किसी दिन बैठूंगा, तसल्ली से बैठेंगे तो अपनी लाइफ हिस्ट्री बताऊंगा आपको, and then you will actually be motivated to do things. So let's see if we can join touch 50 right now, and 20 minutes में I'll go live. That's a promise. I'll check back in 20 minutes. अगर मैं कर पाता हूँ तो I will definitely go live. Otherwise मैं थोड़ी देर में Instagram पे I can, because if there is somebody interested then I'm always available. चाहे 2 लोग भी होंगे, I'm very happy if I can अगर मैं अपनी efforts से I can change even one life, that is great for me. Rupam, YouTube पे I think you should be able to find it's called Let's Motivate and Smile. Amit@divinecosmeticsurgery.com.
सो इफ़ यू कैन सर्च फॉर दैट मिल जाता है, आई एम श्योर यू विल गेट इट, क्योंकि मैंने अगर अभी ऑफ करके जस्ट डू अ क्विक सर्च, ये बंद हो जाएगा एंड देन फॉर रिकनेक्ट मी टेक्स टाइम. सो डॉक्टर टाबी, have I missed out something? Latika, how are you doing? Absolutely wonderful. Great, Samaya. Thank you so much. Tabi, thank you so much for saying that. Let's see. Very soon, very soon, very soon. Maybe in a little while. Let's see. So मुझे YouTube पे वो attendance चाहिए, उसके बिना it becomes little difficult for me. चलिए, thank you so much for joining me live and putting up some interesting things, and sure कि मुझसे connect होके you gain something about surgery, you gain something about life. I'll make, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, I promise I'll make you I'll create a lot of changes in your personal finances. I'll create a lot of changes in your own personal growth. I'll create a lot of changes. मैं कि आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह लाइफ को देखते हैं, मुझसे सीखिए. आप मेरी सर्जरीज तो देखते हैं, आप मेरी सर्जरीज आप में भरोसा करते हैं, अपनी ज़िंदगी का मुझ पर भरोसा रखते हैं. तो अगर आप अपनी लाइफ मुझे देने को तैयार होते हैं सर्जरी के लिए, देन हाँ समायरा, आई थिंक इट्स लेट्स मोटिवेट एंड स्माइल, या लेट्स स्माइल एंड मोटिवेट. एंड ईमेल से या तो मिल जाता है अमित एट डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी.com. तभी व्हाट क्वेश्चन डिड यू आस्क? सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन. सो इतना यू कैन ट्रस्ट मी कि फ्यू थिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली आपको बहुत बहुत चेंज करेगा एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. Great. So I'm going to switch off now, and I'm just going to go to my YouTube channel, and if I touch 50 there, in 20 minutes I'll go live. मैंने एक एडवाइस दिया था, मुझे समझ नहीं आया रूपम. मैंने एक एडवाइस दिया था, आप खुद सिचुएशन क्रिएट करो, रो मत. ओके. Thank you, Gauri. Thank you so much for saying that. Yes, I know I'm giving a beautiful life to many. One of the most interesting things that I'm doing is making people smile and making people happier by doing procedures. And I think the basic goodness that I've achieved is to connect with you people, is to connect with you, your heart, your thought, your brain. And I connect with you to find out what you want, and that is the difference between me and a lot of other doctors. I do not do surgery for money. मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ. I do it for my personal satisfaction. I do it to achieve happiness, to create happiness for you. आप बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट अगर कभी कोई सर्जरी में प्रॉब्लम होती है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो मैं अपने पैसे से पेशेंट्स का इलाज करता हूँ. I have done surgeries, I have done revisions, I have done मैंने पेशेंट्स को बाहर से मध्य प्रदेश से बुलाया हुआ है at my expense. That is how much I feel. So जो मुझे बड़ा ख़राब लगता है जब कमेंट्स आते हैं ना कि डॉक्टर अमित तो डॉक्टर अमित only does for money, and so I feel really bad because those people do not know me, and they just put comments, so I don't bother. But all those who do know me, they know the real truth behind me, because I've come from a very simple background. My dad's from army. We've been happy throughout my life, and I've never worked for money. So neither before, neither ever, and neither in future. So that's the thing. So let's see. I'll just switch off right now. Let's see if we can connect in a few minutes. Have a wonderful night ahead.